Hello, you're watching Hornbill TV's Notice Express Bulletin. I'm Naomi Kugon, and these are the top news for today. The Tripura government has offered permanent jobs to 18 individuals whose family members were victims of political violence. Paramilitary Affairs Minister Ratanlal Nath announced on Saturday. Addressing a press conference at the Civil Secretariat, Nath said 39 petitions have been received under the scheme. Of these, 18 have been approved while others are under review. A high-level scrutiny committee headed by Nath and comprising senior bureaucrats and police officials examines the applications based on reports from district magistrates and superintendent of police. Nath emphasized that political affiliation is not a factor in the selection process. Only eligibility matters. This reflects our commitment to democratic values. Appointments are processed by the Finance Department depending on available vacancies. He added that cases dates back to the late 1990s and early 2000s. Applicants must apply through SDM offices and some requests are pending due to incomplete documentation. Nath also criticized the previous Left Front government, holding them responsible for widespread political killings during their rule. বলছিল বিচার ভার আপনার আপনাকে বলতে হবে পলিটিক্যাল মার্ডার কোনটা হয়েছে আমি তো অসংখ্য তথ্য দিলাম আরে ভাই তাদের কাছে কিছু নেই রে ভাই কিচ্ছু নেই তারা কিছু অশোভনীয় অবৈধ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে একটু বাজিমাত করতে চাইছে তাদের স্টকে কিছু নেই দেখলাম তো আজকে সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস 193টা দেশে যে যোগার সৃষ্টি ইন্ডিয়া আজকে সারা ভারতবর্ষে আমি একটা ইয়েতে গেছি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে যোগা করছে আমাদের যে যোগা ট্রেনিং দিয়েছে সে একটা মেয়ে কি মেয়ে মুসলিম মেয়ে সিপাহীজলা একটা মুসলিম মেয়ে আমাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে তার সংস্কৃত উচ্চারণ কি মেয়েটার নাম কি রিমি বেগম কি বলছে মেয়েটার নাম কি রিমি বেগম সেকেন্ড ইয়ার রামঠাকুর কলেজ সে আমাদেরকে সুন্দর করে ট্রেনিং দিল আমাদেরকে যোগা শিখালো এবং কি সুন্দর প্লেসমেন্ট তার এবং সে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট আইকন 9টা মেডেল পেয়েছে যোগাতে ডিস্ট্রিক্ট আইকন সে মেয়েটা তো এখন আমরা সবাই মিলেই আমরা কাজটা করছি তো আমাদের ভুল ত্রুটি থাকলে নিশ্চিত বিরোধী দল ধরে দেওয়া উচিত ডেমোক্রেটিক ওয়েতে সিস্টেম অনুযায়ী এবং আপনারাও যদি থাকে ভুল সেগুলো ধরে দেবেন সবাইকে A property dealer from Indore who rented a flat to one of Raja Raghuvanchi's killers after the sinister crime has been arrested for allegedly concealing crucial evidence. According to the Meghalaya Special Investigation Team, officials said Shillong James had rented a flat in Indore's Hirabak locality to one of 3 killers, Vishal Singh Chauhan. The victim's wife, Sonam Raghuvanchi, who is the prime accused in the murder case, is also believed to have stayed in the flat between May 26 and June 8 before she surrendered to the police. During her interrogation, Sonam said she left a black-colored bag in the flat on June 8 and left for Kazipur. Sonam's phone, Raja's jewellery, Rs 5 lakh cash and a country-made pistol were also kept in the flat. However, when the police raided the house, they did not find anything. The police then interrogated the flat's property dealer, James, twice, but he did not reveal anything. Meghalaya SIT team and FSL Indore reaches Hare Krishna Vihar colony in Indore with Shillong James, who had burned Sonam Raghuvanchi's bag. FSL Indore collected the pieces of the burned bag and Sonam's belongings for forensic investigation.
के द्वारा शिलोंग पुलिस लगातार यहाँ पर पिछले 4 दिनों से रुकी हुई है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लगातार उनका चल रहा है और यहाँ पर एक टीम भी उनके साथ लगाई गई है इंदौर क्राइम ब्रांच की। वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में उनको असिस्ट कर रही है और SIT के द्वारा लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए एविडेंसेस के आधार पर एक आरोपी शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार किया गया, जो प्रॉपर्टी डीलर है, और उसको अब गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद उसका मेडिकल कराया जाकर उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर फिर उसको लेकर वो शिलोंग रवाना होगी। शिलोंग जेम्स क्या भूमिका रही है, उसको बैग मिला? इसमें अभी किसी तरह का कुछ भी ऐसा शेयर जो जानकारी है SIT के द्वारा शेयर नहीं की गई। इनके द्वारा गिरफ्तारी की सूचना दी गई। क्राइम ब्रांच भी साथ में थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ एविडेंसेज इन्वेस्टिगेशन में ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार किया गया है। ये जेम्स ने विशाल को किराए पर फ्लैट दिया था, वही है? इस संबंध में हाँ, ये संभवतः वही ये प्रॉपर्टी डीलर है। चलो। A cabin crew member of Air India flight AI-171 that crashed in Ahmedabad on June 12, the identity of the late Ngangtoi Sharma Kongbrai Lakpam has been officially confirmed. According to a statement issued by Imphal International Airport, the confirmation has cleared the way for her mortal remains to be brought back to Manipur. Preparations are currently underway at the airport to receive her with full dignity and honor. As per the travel itinerary, the family, along with the mortal remains of Miss Ngangtoi Sharma Kongbrai Lakpam, is expected to arrive at Imphal International Airport from Ahmedabad via Delhi on Indigo. In this moment of deep grief, the public has been urged to keep the bereaved family in their thoughts and prayers. Authorities expressed hope for a smooth and trouble-free journey for the family as they bring their beloved daughter back to the land where she was raised and where countless hearts await her return. The government of Manipur has assured full coordination with Air India and the Airports Authority of India, confirming that all necessary arrangements are in place at Imphal Airport for a respectful reception. The Coordinating Committee on Manipur Integrity, COGOMI, has also appealed to the public for unified and dignified participation during her arrival and the associated ceremonies. Air India on Saturday said it has started releasing the interim compensation of ₹25 lakh each to the victims of the families of the victims and survivors of the June 12 plane crash. The airline said a team of trained psychologists and doctors has been deployed in Ahmedabad to provide trauma counseling and psychological support to the affected families or individuals. Air India said that the team of medical personnel, including nurses and pharmacies, has been deployed to address ongoing or emerging health needs. The interim compensation began being released from 20 June, with 3 families having received payments so far and remaining claims being processed. The airline had on June 14 announced that it would provide an interim compensation of ₹25 lakh or approximately GBP 21,500 to the families of each of the victims and survivors of the airline's Boeing 7878 plane crash in Ahmedabad to help address immediate financial needs. This is in addition to the compensation of ₹1 crore announced by the parent company Tata Sons. Air India said a centralized help desk active since June 15 has been assisting families in processing claims for the interim compensation. As many as 1,117 Indian nationals have been evacuated from Iran under Operation Sindhu. The Ministry of External Affairs said last night 290 Indian nationals have returned home safely from Iran on a special flight from Mashhad that landed in New Delhi. Yesterday evening, another evacuation flight from Mashhad landed in New Delhi with 310 Indian nationals from Iran. Meanwhile, Nepal and Sri Lanka have expressed gratitude to India for assisting in evacuating their citizens under Operation Sindhu from conflict-hit Iran. Nepal's Foreign Minister Arzu Rana Deva thanked External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar for assisting in evacuating Nepali students. In a social media post, she expressed gratitude for India's swift assistance in helping to evacuate Nepali nationals from Iran. MS Deuba said that India's support in the evacuation of Nepali citizens is a reflection of the strength of Nepal-India ties. Earlier, Sri Lanka extended its sincere gratitude to the government of India for the timely assistance in evacuating Sri Lankan nationals from Iran alongside Indian citizens.
In a social media post, the Foreign Ministry of Sri Lanka stated that the act of solidarity exemplifies a strong and enduring partnership between Sri Lanka and India and is deeply appreciated by the people of the island nation. मोदी जी का ख़ास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है पूरी टीम का, एम्बेसडर का, और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट किया और मुस्तकिल लगे रहे, रात दिन लगे रहे, हमारे लिए खाने का, बस का, नाश्ते का, होटल का पूरा इंतज़ाम किया। 2 बजे रात तक उनकी टीम लगी रही और किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हिंदुस्तान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, यहाँ के लिए दुआ करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। के समय और कैसी स्थिति वहाँ आपने देखी? अरे यही लग रहा था कि वतन पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम लोग बहुत घबराए हुए थे वहाँ की कंडीशन सुन के देख के, लेकिन जब यहाँ की एम्बेसी पहुँची, हम लोग की मदद की, तो बहुत हम लोग को मतलब जैसे लगा कि अब हम अपने वतन पहुँच जाएंगे और पहुँच भी गए। बहुत सेफली महसूस कर रहे हैं अपने वतन आके, बहुत अच्छा लग रहा है। सेफली बहुत गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे इंडियंस ईरान में थे वो लोगों को सेफली रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, और एम्बेसी ऑफ तेहरान एंड एम्बेसी ऑफ एस्काबाद, ये दोनों ने ही स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब पर्टिकुलर 24-24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं और जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे उन लोगों को सेफली रिमूव करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम मतलब मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम लोग तो उम्मीदें खो चुके थे अपनी, लेकिन जैसा कि वहाँ भारत सरकार ने हम लोग के साथ किया और दूतावास ने के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जैसे एक परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही एक दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे सारा अरेंजमेंट कर दिया होटल में रहने को। जिस दिन से बात हुई है उसके बाद से हम लोगों को ना कहीं खाने की प्रॉब्लम हुई, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। सारे फैसिलिटीज़ जितनी थी, साधन जितने थे, बस का जहाँ पे बस की ज़रूरत थी जहाँ पे थी, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो गए तो फिर हमको उन्होंने होटल में जाके ठहराया। होटल में ठहराया, वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट उनका था। बहुत अच्छा, जितना भी तारीफ की जाए कम है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। In a breakthrough in the Pahalgam terror attack case, the National Investigation Agency has arrested 2 men for harboring the terrorists who had carried out a horrendous attack that killed 26 innocent tourists and grievously injured 16 others, the agency said on Sunday. NIA said that the 2 arrested accused, Parvaiz Ahmed Jotar from Badkode in Pahalgam and Bashir Ahmed Jotar of Hill Park in Pahalgam, have disclosed the identities of the 3 armed terrorists involved in the attack and have also confirmed that they were Pakistani nationals affiliated to the proscribed terrorist outfit Lashkar-e-Taiba. Citing its investigations, NIA said that Parvaiz and Bashir had knowingly harbored the 3 armed terrorists at a seasonal dog hut at Hill Park before the attack. The 2 men had provided food, shelter and logistical support to the terrorists who had, on the fateful afternoon, selectively killed the tourists on the basis of their religious identity, making it one of the most gruesome terrorist attacks ever. Over the arrest, National Conference Chief Farooq Abdullah said that now they will find them out. If they have got them correctly, it is a very good thing, and that gradually they will reach those who carried out the Pahalgam attack. अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहाँ से आए थे। तो जिन्होंने, अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुँच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है और हमारी सारी माशरत को ख़त्म करने की कोशिश की गई।
In a recent escalation of tensions, the United States has intensified its involvement in the ongoing Israel-Iran conflict by launching strikes on 3 nuclear facilities in Iran. Defense expert Praful Bakshi stressed on Sunday the importance of India's potential role in de-escalating the situation. He pointed out how Prime Minister Narendra Modi could leverage India's amicable relationships with both Iran and Israel to broker peace discussions. According to Bakshi, the strikes on Fordo, Natanz and Esfahan have demonstrated to Tehran the seriousness of Washington's intentions. He likened the U.S. actions to a predator's pursuit of prey, sparing no effort in their objective. Bakshi predicted that President Donald Trump might persist with similar aggressive maneuvers, illustrating America's resolute stance. The strikes serve not only as a message to Iran, but also as a caution to China and Russia, both of whom have expressed support for Tehran. On the back of these actions, President Trump issued a warning to Iran, noting that without a satisfactory peace agreement, the potential consequences for Iran could be severe, surpassing recent turmoil. Trump also praised Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, emphasizing the close cooperation between the two nations in addressing the threat posed by Iran. सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नीदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहाँ से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे। लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहाँ से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज़ है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है,
अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारा ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में। और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है। तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे, और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप अंत करिए और उसको नीचे लाइए। तो अभी अब देखना होगा, अमेरिका के पास वेपन्स हैं, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस। India has started to evacuate its nationals from Israel as the ongoing conflict in the Middle East escalated, with the US attacking 3 nuclear sites in Iran on Sunday, sources said. The MEA had said this week that India will evacuate those Indian nationals who wish to leave Israel. The travel from Israel to India will be facilitated through the land borders and thereafter by air to India. MEA said that the government of India accords the highest priority to the safety and security of Indian nationals abroad. All Indian nationals have been asked to register themselves with the Embassy of India in Tel Aviv at a given website. India had already launched Operation Sindhu to evacuate its nationals from Iran. More than 800 Indian nationals, including over 300 students, have so far been brought back on 3 charter flights, 2 from Iran's Mashhad and 1 from Turkmenistan's Ashgabat. That's all for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.